हाय गाइस, फाइनली मैंने अपना 6 मिनट का पर्सनल बेस्ट बीट कर दिया। मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है। अभी जस्ट मैंने वेट किया है और मैं से ये कर रहा हूँ। अभी तक मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है, बहुत हालत ख़राब हो रहा था। मैं अभी हमारी लाइट चली गई है तो मैं सोचा गेम ही कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। होता नहीं है, मतलब मैं अपना ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा खेल लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में लैग हो जाता है तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है। बट इस बार नहीं हुआ। शायद मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बहुत ऊपर जा गया था, पर मैंने हक दिया था मैंने ऊपर जाके, इसलिए लैग नहीं हो रहा था अभी। बट ये वाला बहुत अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट 4 मिनट के अंदर शायद कह दिया था। कितना 5 मिनट के अंदर, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, बहुत टाइम लगा इसको करने में। प्रैक्टिस भी कम हो गई थी मेरी, एग्ज़ाम चल रहे थे। बट यप, मैंने कर दिया फाइनली। अब गेटिंग ओवर इट में इतनी सारी दिक्कत है मोबाइल में, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम गेटिंग ओवर इट में आ रहे हो ना, प्लीज़ पीसी में आओ। यहाँ पर मॉड है बट जो मॉड है ना, सेफ स्टेट बहुत ही कमज़ोर है इधर, मतलब काम नहीं करता। जो मेरे पास अभी है उसमें काम नहीं करता। ठीक है, बहुत ग्राइंड मैं ना ऑरेंज हिल तक मैं बहुत अच्छा चले जाता हूँ हर बार। बट ऑरेंज के बाद जो बकेट है, जो माउंटेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है ये ऑरेंज के बाद, बहुत इरिटेटिंग है मजाक से हट के। वो मेरा बहुत ख़राब है। माउंटेन में मुझे गड्ढे ही नहीं मिलते, बट इस बार बकेट ने और माउंटेन ने दोनों ने साथ दे दिया मेरा, जिससे मैं फाइनली चला गया ऊपर। तो इंजॉय द रन, और कुछ नहीं बोलने वाला। Recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world.